समस्त को आज क्लास को स्वागत। आज आम जहाँ पढ़ा जाऊे सी हूँ आमर जो स्पेशल ओटीटी एग्जाम रही 2025 से आम आज इंग्लीश पेडागोजी किसी क्वेश्चन आलोचना करवा जोटा कि आमर ये जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहिबो। जो मैंने प्रथम थर पर चैनल को आसी निहाती भाव चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे बोली आशा एवं आमर टेलीग्राम चैनल जब एपर्यंत जॉइन होना टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जातु जहाँफल सब वीडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन पाइपर एवं एठारे आम ओटीटी टोटाल संपूर्ण सेक्शन जहाँ रही सबू सेक्शन विषय गुड़िक आलोचना करवा। ठीक अच्छे तो चलो आरंभ करवा आज इंग्लिश पेडागोजी क्लास। प्रथम प्रश्न रही व्हिच इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ए सेंटेंस। गोटे सेंटेंस रो फर्स्ट कंपोनेंट्स कौन रही फ्रेज सिलाबल क्लॉज और वर्ड। तो वन रो करेक्ट आंसर आसीबो सिलेबल। सिलेबल इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ए सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स एक्सपोजर टू द साउंड्स ऑफ ए लैंग्वेज। से कहछि या भितर को जिनसटा हमर एक्सपोजर हबो गोटे लैंग्वेज रो साउंड्स को हमें फॉलो करबा पई लिसनिंग रीडिंग स्पीकिंग और राइटिंग। ये आसीबो हमर लिसनिंग। जदि आमे किछि अलग भाषा शिखिबा को चाहूचे हमर मातृभाषा व्यतीत ताहले हमकु सेटा लिसनिंग करबा को भी पड़िबो। लिसनिंग कला पर देखो लिसनिंग होची गोटे आउटपुट इनपुट इनपुट हो सारा पर ही आउटपुट हम। तेणु आम जी लिसनिंग करवा लिसनिंग कर सारा पर ही से भाषार वर्ड सहित आम टे एक्वेंटेड हेबा। तेणु 2 आंसर आसीबो ए। क्वेश्चन नंबर 3 दिला लैंग्वेज इज इनिशियली लर्न थ्रू। लैंग्वेज टा को आम इनिशियली केमिति शिखो टीचिंग इमिटेशन ट्यूटरिंग और परसुएसन। जदि 4टा ऑप्शन को भल भाव देखा आम प्रथम गोटे भाषा को अनुकरण करके शिखु इमिटेशन। ओके इमिटेशन जोटा आम कहचे लैंग्वेज इज इनिशियली लर्न थ्रू इमिटेशन। नेक्स्ट बा क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 कौन रही क्वेश्चन नंबर 4 आमर रही एनकोडिंग इज रिलेटेड टू। एनकोडिंग एनकोडिंग टा रिलेटेड करिवो कहा सहित। ये ऑप्शन रही रीडिंग स्किल ना स्पीकिंग ना राइटिंग ना लिसनिंग। एनकोडिंग एनकोडिंग कथा से कही तो एनकोडिंग आमर आसीबो राइटिंग पाई। एनकोडिंग रिलेटेड टू राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 को जीवा व्हाट इट इज व्हेन सम पोर्शन ऑफ ए सेंटेंस अल्टर्ड विथ मोर डिग्री ऑफ फोर्स। से कहला व्हाट इट इज व्हेन सम पोर्शन ऑफ ए सेंटेंस अल्टर्ड विथ मोर डिग्री ऑफ फोर्स। ताको मैं प्रोनाउंसिएशन कहबा ना इंटोनेशन कहबा ना पॉज कहबा ना स्ट्रेस कहबा। तो यहाँ हम स्ट्रेस। ओके ऑप्शन डी हम यार करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न देला 6 नंबर व्हाट इज द आर्टिकुलेशन रिलेटेड टू। आमर आर्टिकुलेशन टा का को रिलेट करिवो बोली से पचारिछि साउंड को ना ग्राफिक ना स्क्रिप्ट ना कॉन्टेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आसीबो सी हबो ए साउंड को इटा रिलेट करिवो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टीलिंगुअल स्किल। या भितर मल्टीलिंगुअल स्किल केउंटी लिसनिंग रीडिंग स्पीकिंग और राइटिंग। मल्टीलिंगुअल माने 2 रु 3टी भाषा कथा से कहिछि। तो से मल्टीलिंगुअल स्किल कोटा हबो। तो 7 रो करेक्ट आंसर जो हबो सेटा हबो रीडिंग मल्टीलिंगुअल स्किल। ठीक अछि। तापर जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइम स्टेटमेंट। लिसनिंग implies the comprehension, correct articulation leads to the correct pronunciation, reading is associated with phonic substance, writing is a productive skill। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो करेक्ट आंसर आसीबो रीडिंग इज एसोसिएटेड विथ फोनिक सब्सटेंस नॉट ए टाइम स्टेटमेंट। एटा हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइम स्टेटमेंट देथिला। तेनु रीडिंग इज एसोसिएटेड विथ फोनिक सब्सटेंस एटा होयार करेक्ट स्टेटमेंट। परवर्ती देछि क्वेश्चन नंबर 9 यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वोकाबुलरी इज एसेंशियल इन द स्किल ऑफ। सी कहला एप्रोप्रिएट वोकाबुलरी हमें यूज करबा कोथि पय एटा एसेंशियल लिसनिंग और स्पीकिंग स्पीकिंग और राइटिंग रीडिंग एंड राइटिंग राइटिंग एंड लिसनिंग।
तो यहाँ भी पूरा सहज क्वेश्चन अच्छी ये हम स्पीकिंग एंड राइटिंग ये दुईटा जगह आम एप्रोप्रिएट वोकाबुलरी यूज करवा। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 डिकोडिंग इज एसेंशियल व्हाइल डिकोडिंग टा लिसनिंग रीडिंग स्पीकिंग राइटिंग कोटा आसीबो डिकोडिंग कथा से पचारछि तो 10 रो हबो सी रीडिंग। ओके रीडिंग हबो यूजिंग एप्रोप्रिएट वोकाबुलरी इज इंपोर्टेंट इन द स्किल ऑफ एप्रोप्रिएट वोकाबुलरी कोथि पय इंपोर्टेंट लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग स्पीकिंग एंड राइटिंग लिसनिंग एंड राइटिंग ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो सारा तेणु यार आंसर ऑलरेडी आम जानी ऑप्शन सी स्पीकिंग एंड राइटिंग। परवर्ती प्रश्न देला लिसनर हैज नो चॉइस बट रिसीव व्हाट स्पीकर सेज स्टिल व्हाट ही इज द रीजन फॉर कंसीडरिंग लिसनिंग एज एन एक्टिव स्किल से कल लिसनर हैज नो चॉइस ता पाखरे किसी चॉइस नहीं बट टू रिसीव व्हाट द स्पीकर सेज ताले एई जगह रे व्हाट इज द रीजन फॉर कंसीडरिंग लिसनिंग एज एन एक्टिव स्किल listener listen to the speaker listener interprets and comprehends the speaker speaker initiate interaction listener respond to the speaker ताले कोटो को हमें एटा को एक्टिव स्किल भाबरे नै परिबा तो 12 रो करेक्ट आंसर आसीबो बी listener interprets and comprehends the speaker। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 13 नंबर which of the following implies continuity coherence accuracy fluency exactness continuity कथा से कहिछि तो 13 रा करेक्ट आंसर आसीबो coherence। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करबा क्वेश्चन नंबर 14 इंटरएक्टिव लिसनिंग इज listening and responding listening for mood and tone understanding the message listening to learn pronunciation इंटरएक्टिव लिसनिंग हमें कोटा कहबा ना लिसनिंग हो तो तार रेस्पॉन्डिंग भी रहा दरकार तेणु 14 रो लिसनिंग एंड रेस्पॉन्डिंग 15 रे देला टेस्ट ऑफ लिसनिंग इज ए टेस्ट ऑफ से कहला टेस्ट ऑफ लिसनिंग इज ए टेस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी रिसेप्टिविटी फोनेटिक्स और हियरिंग एबिलिटी एटा कार टेस्ट होची हम जते बेले कोनोसी जिनिस सुनुचे तो ये हबो रिसेप्टिविटी आमे केते रिसीव करूचे से जिनिस को टेस्ट करा होची। क्वेश्चन नंबर 16 रहिला रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाय रीडिंग स्किल टा कार डेवलप हे परिबो ता द्वारा केमिति द्वारा हे परिबो का द्वारा गिविंग वोकाबुलरी एक्सरसाइज इंप्रूविंग वन आई स्पैन टीचिंग हाउ टू चंक लार्ज आई स्पैन एंड प्रॉपर चर्निंग कोटा हबो क्वेश्चन नंबर 16 तो 16 रो आंसर हबो लार्ज आई स्पैन एंड प्रॉपर चर्निंग डी हबो यार करेक्ट आंसर जोटा कि 16 नंबर। नेक्स्ट हम मूव करबा 17 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट या भीतर कोटा कोटा करेक्ट स्टेटमेंट नुह बोली से पचारिछि ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू बिहेवियरल चेंजेस ठीक अछि कन्फर्ट बिहेवियर कैन बी सीन व्हेन वन स्पीक्स केवल स्पीक्स रे हबो एटा राइटिंग रे भी परिबो लर्निंग अफेक्ट्स बोथ कवर्ट एंड ओवर्ट बिहेवियर एटा ठीक अछि लैंग्वेज is learned primarily for facing live context एटा भी ठीक अछि ताले नॉट करेक्ट कोटा हबो 17 रो बी 17 रो बी आसीबो करेक्ट आंसर ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा 18 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स objectives are related to aims objectives are the short term goals objectives can be tested all the above of the statement ताले 18 रे यार आंसर आसीबो ऑप्शन डी कहीं ना ऑब्जेक्टिव्स टा एम को रिलेट करिकि शॉर्ट टर्म गोल्स पई आउ ऑब्जेक्टिव कैन बी टेस्टेड तेनु डी ऑप्शन हबो करेक्ट आंसर। 19 नंबर देखिबा गिवन बिलो आर द लैंग्वेज स्किल व्हिच ऑफ दीज आर द रिसेप्टिव स्किल रिसेप्टिव माने इनपुट इनपुट माने कोन एल एस आर डब्ल्यू तार अर्थ एठी आसीबो लिसनिंग ये होची गोटे रिसेप्टिव आ गोटे आसीबो रीडिंग 1 आउ 3 19 रो ए ऑप्शन रे अवेलेबल अछि तेनु ए हबो यार करेक्ट आंसर। ओके तो ये जो लिसनिंग रहिला आ रीडिंग रहिला एटा होची हमरो रिसेप्टिव आ दिटा हला प्रोडक्टिव।
नेक्स्ट बा 20 नंबर को व्हिच ऑफ द कॉम्बिनेशन आर प्रोडक्टिव स्किल एठी पळा आसिला प्रोडक्टिव स्किल तार तो से एलएस आर डब्ल्यू को चलो टिके आगरो मु तुमको कहली जे रीडिंग आउ लिसनिंग एटा हला रिसीप्टिव आउ एस आउ डब्ल्यू स्पीकिंग एंड राइटिंग कोटी अछि ऑप्शन सी रे अवेलेबल अछि तेणु 20 रो जो करेक्ट आंसर आसीबो सी हबो ऑप्शन सी व्हिच एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज डील्स विथ ग्रामर लैंग्वेज रो को एस्पेक्ट्स ता हमर ग्रामर सहित डील करूची सब्सटेंस कॉन्टेक्स्ट फॉर्म ऑल ऑफ दीज तो 21 रो जो करेक्ट आंसर आसीबो एटा ऑल ऑफ दीज हबो को एस्पेक्ट सब्सटेंस कॉन्टेक्स्ट आउ फॉर्म तीनटा जाक हमर डील करूची ग्रामर सहित 22 दला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स राइज एंड फॉल ऑफ द टोन प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस इंटोनेशन पॉज राइज एंड फॉल ऑफ टोन या कथा जदि से कहूची ताले एठी आंसर आसीबो इंटोनेशन ओके सी होची यार करेक्ट आंसर केते बेले हम बड़ पाठ रे कहूचे केते बेले धीरे कहूचे ठीक अछि ताका हम कहूचे इंटोनेशन परवर्ती जवा 23 स्पेसिंग इज रिक्वायरमेंट इन द स्किल ऑफ स्पेसिंग माने हम छाडी छाडी लेखिबाटा ताले मु ऑलरेडी कहि सनी लेखिबा कथा तनो एटा को स्किल पाइ निहाती भाबरे हेतिबो ना ये हमर राइटिंग स्किल कथा हमें लिखिला बेले शब्द को शब्द मध्य रे टिके गैप रखिकी लिखिबा व्हिच टाइप ऑफ रीडिंग कैन फैसिलिटेट प्रोनाउंसिएशन को रीडिंग टा फैसिलिटेट करिवो रीडिंग अलाउड साइलेंट रीडिंग इंटेंसिव रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग देखो सी कही फैसिलिटेट प्रोनाउंसिएशन कथा कहला माने 24 रा आंसर आसी जिवो ए से जदि उच्चारण करिवो बड़ पाटी रे पढिबो ताले तार प्रोनाउंसिएशन रे इंप्रूवमेंट आसीबो रीडिंग स्किल इंप्रूव्स रीडिंग स्किल केतेबेले इंप्रूव हबो लिसनिंग करले ना स्पीकिंग ना राइटिंग द अदर 3 लैंग्वेज स्किल देखो 25 रो जो करेक्ट आंसर आसीबो रीडिंग स्किल को डेवलप करिया को हेले आउ जाको भी डेवलप करिया को पड़िबो तनु द अदर 3 लैंग्वेज स्किल रीडिंग स्किल इंप्रूव्स देछि रीडिंग टा इंप्रूव करूछि कार आउ जो तीनटा रहला हमर कोटा ना लिसनिंग स्पीकिंग और राइटिंग को ताको इंप्रूव करूछि 26 नंबर दला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज इनिशिएटेड इन ट्रेडिशनल अप्रोच व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स इज इनिशिएटेड इन द ट्रेडिशनल अप्रोच रे कोटा थिला बेल से पचारि छी सेटा हबो प्रथम रे कोन थिला रीडिंग ऑप्शन ए 26 रो ऑप्शन ए आवर कॉम्प्रिहेंड्स बेटर व्हाइल रीडिंग वन कॉम्प्रिहेंड्स बेटर ठीक रे कॉम्प्रिहेंड से करि परिबो को रीडिंग रे अलाउड साइलेंटली एक्सटेंसिवली स्लोली तो 27 रो करेक्ट आंसर हो साइलेंट रीडिंग साइलेंटली वन हु कॉम्प्रिहेंड्स बेटर व्हाइल रीडिंग साइलेंटली 28 नंबर दला इन डेप्थ स्टडी इज इंटेंडेड फॉर इन डेप्थ स्टडी कथा से कहिछि मीनिंग मेकिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग डिटेल्ड एनालिसिस लोकेटिंग फैक्ट्स तो इन डेप्थ स्टडी इज इंटेंड फॉर ये हबो कोन डिटेल्ड एनालिसिस ऑप्शन सी हबो यार करेक्ट आंसर तापर जबा 29 नंबर को स्टिमुलेशन एंड रोल प्ले आर यूज्ड फॉर इंप्रूविंग द स्किल ऑफ रोल प्ले आउ सिमुलेशन ये दीटा जाक को स्किल को इंप्रूव करबा पई करा जाउची लिसनिंग ना रीडिंग ना स्पीकिंग ना राइटिंग तो ये आंसर आसीबो स्पीकिंग स्किल को इंप्रूव करबा पई करा होची नेक्स्ट देछि रिवाइजिंग इज ए क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिवाइजिंग कार गोटे क्रिटिकल एस्पेक्ट स्पीकिंग राइटिंग रीडिंग और लिसनिंग तो ये 30 टा करेक्ट आंसर आसीबो सी राइटिंग रिवाइजिंग टा होची क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग 31 दला ब्रेनस्टॉर्मिंग इज मोर यूजफुल फॉर होती पाई लिसनिंग रीडिंग स्पीकिंग और राइटिंग 31 तो ये हम राइटिंग पाई ब्रेनस्टॉर्मिंग इज मोर यूजफुल फॉर राइटिंग तापर आज लास्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट फॉर द राइटिंग स्किल पाई कोटा रिक्वायर न तो 32 रो ए सीक्वेंसिंग तो रिक्वायर पैराग्राफिंग भी रिक्वायर रीअरेंजमेंट भी रिक्वायर जो रिक्वायर न
ताले एसेंट सी हम यार करेक्ट आंसर। आशा करुच्ची सब प्रश्न गुड़िक समस्ते क्लीयरली बुझीपारे। यदि बुझीपारी भिडियोटी को लाइक करूँ एवं एपर्यंत जदि आम चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी। आपण मान सहित देखा नेक्स्ट क्लास रे। थैंक यू।